नमस्कार आपण समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आपण सहित +3 5th सेमिस्टर Pol.Sci.Honours DSE 2 रो यूनिट 2 डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर में डिस्कसन करबा। आ वीडियो आगम कहबी जे आपण माने पीडीएफ बा नोट्स टी किपर भाबे डाउनलोड करि परबे। तो चलନ୍ତୁ स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट टाइम देखिबा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स माने हम ब्रिटिशर पूर्व आम इंडियन इंडस्ट्री किपर थिला माने कोन थिला देखिबा। तो इंडियन इंडस्ट्री हैड ए ग्लोबल परसेंस बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर इन इंडिया। तो हम इंडिया रे आगुर ही हम ग्लोबली सब ट्रेड ओके सब करथिले इंडस्ट्री हम पढ़थिले। इंडिया अकाउंटेड फॉर ए क्वार्टर of a world's industrial output. The export from India consisted of manufactured goods like cotton, silk, artistic wire, silk and wooden cloth. तो ये सब आम कौन इंडिया मैन्युफैक्चर होता बाहर को एक्सपोर्ट होता जेपरी कटन हो पारे कि कटन सिल्क आर्टिस्टिक वेयर सिल्क ओके एंड वुडन क्लॉथ। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडियन इंडस्ट्री ब्रिटिश पॉलिसी इंडियन इंडस्ट्री कौन कौन सब प्रभाव पकाइला। तो ड्यू द इंपैक्ट टू क्राफ्ट टू ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी देयर वाज ए डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द एनकरेजिंग द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स टू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। इट हैड ए बैड इंपैक्ट ऑन आम जानते जो ब्रिटिश मैंने आसला आमर जो निजर जो हैंडीक्राफ्ट था बंद है मैंने आस्ते आस्ते बंद हो चलला। आ ब्रिटिश मैंने कौन कले आम कंचा मान नहीं कि मैन्युफैक्चर कले जो फिनिश गुडटा आम इंडियन मार्केट लॉन्च कले जहाँकि आम इंडियन इकोनॉमी गोटे खराब प्रभाव पकाइला बैड इंपैक्ट पकाइला। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडस्ट्री जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंपैक्ट कौन आम इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान डिड नॉट विजुअलाइज एनी लार्ज स्केल प्रोग्राम्स फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट ओनली प्रोवाइड an effort for the development of both private and public sector. Right about the second 5 and second कौन है ना second 5 year plan gave to top priority of industrial second आम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दिया गला। इन दिस पीरियड माने सेकेंड 5 year plan समय रे अंडर द फेमस महालनोबिस मॉडल द टैक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। व्हाट इज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। द पीरियड ऑफ 1980 1991 1980 ରୁ 1991 कैन बी कनसाइडर द पीरियड ऑफ रिकवरी। तो यही समय कौन आम जो इंडियन अर्थनीति पूरा बिगड़ी जाता ब्रिटिशर मैंने रूल कर सब आम इंडियन इकोनॉमी को बिगाड़ी देते कि कौन कले ना से समय आम निजक रिकवरी कले इंडियन इकोनॉमी को आम इंडस्ट्री को। एट दैट टाइम देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। से समय आम जो इंडियन इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है बढ़ला। This period was also marked by a significant recovery in the manufacturing and capital goods sector. Okay. What initiative were taken in 9th 5 year plan? 9th 5 year plan during 9th 5 year plan, regulation of the debit programs were emphasized to improve the government fiscal position. They are improving the quality of life, creation of regional balances, self रिलायंस इटीसी ओके ये सब थिला 9th प्लान। व्हाट इज इकोनॉमिक सेक्टर द इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी को गुड़ाए सेक्टर अच्छे परिकी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर कहले हम बुझिबा द एक्टिविटीज ऑन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडरटेकन प्राइमरली डायरेक्टेड बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। तो यही समय आम जो प्राकृतिक रिसोर्स संपल हम यूज करती जेपरिक एग्रीकल्चर माइनिंग फिशिंग फस्ट्री डायरी इटीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस सेक्टर मैंने प्राइमरी सेक्टर एग्जांपल एग्रीकल्चर तो पर आसपारे प्राइमरी सेक्टर गोटे एग्जांपल दियो ओके। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द इंडस्ट्री। तो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज सेकेंडरी इंडस्ट्री ओके where finished products are made from the natural materials produced in the primary sector. Industrial production cotton fabric sugar and production common जेपरिक हम कॉटन तैयारी बने चीनी बनेबा ओके यह सेकेंडरी सेक्टर। व्हाट इज इट टेरिटरी सेक्टर ऑफ द सर्विस सेक्टर ना सर्विस सेक्टर टेरिटरी सेक्टर एक्टिव्स हेल्प इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टेरिटरी सेक्टर do not produce goods by itself but they help to support in production. तो ये सब कौन ना
इकोनॉमिक एक्टिविटी होता जो प्रोड्यूस मैंने थे निजे प्रोड्यूस कर कि जपरिक जो सर्विस मैंने कौन आम गोटे प्रोडक्शन करवा तो जेहतु आम कौन किसी लार्ज प्रोडक्शन कर लोक दरकार मेन पावर दरकार तो से सर्विस सेक्टर कहुए कि बुझार किसी मैंने बहुत इजी गुड्स प्रोवाइड्स बाय ट्रक्स ट्रेन्स बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंस कम्स अंडर द सेक्टर जपरी ट्रक नेबाणी कर ट्रांसपोर्ट ट्रेन रे बैंकिंग रे इंश्योरेंस रे फाइनेंस ओके व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन ना ऑर्गेनाइज सेक्टर आर डिफाइंड एज ए सेक्टर व्हिच इज रजिस्टर्ड विथ द गवर्नमेंट जहाँकि सरकार कौन रजिस्टर्ड थे ऑर्गेनाइज थे गोटे ऑर्गेनाइजेशन थे संगठन थे वर्कर्स इन दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड एम्प्लॉयमेंट्स गेट एश्योर्ड वर्क सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी इन दिस सेक्टर तो ये समय जो एम्प्लॉय था से निजक सुरक्षित मन करती व्हाट इज अनऑर्गेनाइज कौन कौन ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अन्नाम इनफॉर्मल सेक्टर मध्य दिस एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल इकोनॉमी आर नेदर टैक्स और मॉनिटर्ड बाय एनीवन गवर्नमेंट एनी फ्रॉम गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर इज नो जॉब सिक्योरिटी यही समय कौन ये सेक्टर किसी जॉब सिक्योरिटी न थाए किंतु ऑर्गेनाइज सेक्टर थाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रही चरित्र इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट द वर्कप्लेस इज scattered and fragmented in the working hours various according to the agreement जो इनफॉर्मल सेक्टर ताको एग्रीमेंट थाए तुम ये काम कर तो सब प्राइवेट क्षेत्र में कहीपर द वर्कर्स वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट कौन कौन रही तो द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपोर्ट्स तो ये सब कौन एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट रही इट रेंडर्स सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल तो यहाँ द्वारा कौन ना एग्रीकल्चर आम सब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल जीव रॉ मटेरियल गला पर ना सेकेंडरी को हम सेक्टर हम तो रॉ मटेरियल जीव गला गुड्स सब फिनिश्ड गुड्स हम वर्कफोर्स एंगेज इन द सेक्टर नेक्स्ट देखा व्हाट आर द मेजर क्रॉप सीजन इन इंडिया तो दीज आर 3 मेन क्रॉप सीजन आम इंडिया 3टा मेन क्रॉप सीजन थाए जपरिक दीज आर खरीफ रबी एंड जादी क्रॉप्स द खरीफ क्रॉप्स आर राइस maize, bajra, cotton. Rabi crops include wheat, gram, pea, mustard, and lines. Jade crops are cucumber, pumpkin, watermelon, and bitter ground. Okay. What is the Seeds Act 1966? 1966 Seeds Act कौन ना legislative framework from regulation of quality seeds in the country. System of certification of seeds sold in India. Notification of varieties a pre-requisition certification. तो है किसी आर्ट्र जो एक्ट था तार किसी प्रोवाइड करे आम कि 1996 एक्ट सीड्स एक्ट व्हाट इज NSP 3 नेशनल स्पीड प्रोजेक्ट 3 बाय NSP 3 एम्ड एट ओवरऑल इम्पोर्टेंट इन सीड क्वालिटी प्रोग्राम गोटे सीड क्वालिटी मैंने जो मंजी सीड अच्छे आम क्वालिटी किपर इम्प्रूव कर गोटे प्रोग्राम होता है द सेंट्रल सीड कमिटी हैज वेरीफाइड 2385 वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप साइंस 1969 What are 2 sponsor scheme of a government regarding bio fertilizer? The government of India implementing 2 sponsor schemes with a balanced use of fertilizer to popularize the use of organic resources of nutrients. National Project and Technology Mission Development and Use of bio fertilizers. Okay, so that 2 sponsor scheme थी government रो जदि आप कमेंट करूँ जहाँ आप डाउट अच्छी मैंने डाउट तथा भी चाहते गोटे सेपरेट वीडियो खाली गोटे से गोटे 1 टॉपिक पर तो कमेंट कले आम तापर वीडियो मत बनवा किसी असुविधा नहीं व्हाट इज वेलो रेगुलेशन Wellow regulation कौन ना oil seed sector has now become the major foreign exchange earner. The technology mission in this sector provide the necessary breakthrough in oil seed production. This is popularly known as wellow regulation. तो wellow regulation कौन ना oil seed sector. So oil seed sector has now become the major foreign exchange earner. तो हम देखले जो oil seed sector रही ताहा गोटे आम जो foreign exchange कमी पैसा कमी गोटे मेजर रोल प्ले करे द टेक्नोलॉजी मिशन इन दिस सेक्टर प्रोवाइड नेसेसरी ब्रेकिंग थ्रू द ऑयल सीड प्रोडक्शन एथि कौन टेक्नोलॉजी मत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे दिस इज पॉपुलर नोन एज येलो रेगुलेशन सो व्हाट इज येलो रेगुलेशन तो येलो रेगुलेशन कौन ना ऑयल सीड सेक्टर हैज नाउ बिकेम द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर
माने फॉरेन एक्सचेंज जो आम जो पैसा कमाउछन अर्न करछन्ती एक्सचेंज ऑनरे ऑयल सीड सेक्टर जो रही है गोटे बिकेम मेजर प्ले रोल प्ले करे द टेक्नोलॉजी मिशन इन दिस सेक्टर ए विषय सेक्टर कौन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द नेसेसरी ब्रेक थ्रू इन ऑयल सीड प्रोडक्शन दिस इज पॉपुलर नोन एज वेल रेवोल्यूशन व्हाट इज NABRBART तो NABRT कौन NABART refers to the National Bank for Agriculture and Rural Development. It was established on July 12, 1982 for the promotion of agriculture. तो यह कौन है ना फास्ट एस्टाब्लीश है जुलाई 12 1982 रे कहीं ना प्रमोशन एग्रीकल्चर रूरल इंडस्ट्रीज विलेज इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज इन रूरल एरिया फ्रॉम डेवलपमेंट जो आम जो रूरल एरिया रे सब जो आम रही एग्रीकल्चर हो पारे कि रूरल इंडस्ट्री हो पारे विलेज इंडस्ट्री हो पारे हैंडीक्राफ्ट्स हो पारे कि अदर एक्टिविटीज थाए ताकू डेवलपमेंट करने NABRT जहाँकि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जुलाई 12 1982 ताकू एस्टाब्लीश करागला व्हाट इज फार्म एंड होम प्रोग्राम्स तो द average duration of farm and home program broadcast is 60 to 100 minutes. Farm schools as a method of communicating distance education on farming has been adopted by all India radio stations. What is National Agricultural Technology Project? The National Agricultural Technology Project कौन National Agricultural Technology Project was jointly prepared by the ICAR and Department of Agricultural Cooperation. Its main aim is technology generation and its transfer. It three major components are agro ecosystem research, innovation and technology dissemination, organization and system management. तो है तीनोटी major component जहाँ कि agro ecosystem research, innovation in technology dissemination, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर रे कौन कौन मेजर प्रॉब्लम था समस्या देखा थी तो जेपरी कि स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी तो ये सब प्रॉब्लम थे व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स तो लैंड रिफॉर्म्स कौन लैंड रिफॉर्म्स रिफर्स टू एफर्ट्स टू रिफॉर्म द ओनरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड इन इंडिया तो लैंड रिफॉर्म कले कौन ना जाए ओनरशिप को रिफॉर्म करवा चेंज करवा कि रेगुलेशन ऑफ जो लैंड को रेगुलेशन ताकू चेंज करवा ताकू बुझाए ये रिफर्स टू द redistribution of lands by government from landlords to landless people for the agriculture special purpose तो special purpose कौन ना कृषि बा एग्रीकल्चर स्पेशल पर्पज रे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हुए सरकार द्वारा हो पारे कि लैंड लेडर्स को द्वारा हो पारे सरकार कौन करती लैंड होल्डर जी के होल्डर थांती जमी ना थे तांकुडू लैंडलेस टू पीपुल ओके फॉर एक्स्ट्रा टेनेंसी रिफॉर्म्स सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग तो ये सब था लैंड रिफॉर्म होता है तो लैंड रिफॉर्म होता है आगे पढ़ा व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म तो लैंड रिफॉर्म रो मेन ऑब्जेक्ट कौन ना टू रिमूव पॉवर्टी दारिद्र्य दूरीकरण टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर to reduce the inequalities in ownership of land. Write about Agrarian Reforms Committee. तो Agrarian Reform Committee कौन the Indian National Congress appointed the Agrarian Reform Committee under the leadership of J.G. Kumarappa from making study agrarian relations prevailing in the country. तो J.G. Kumarappa नेतृत्व रे जो Agrarian Reform Committee करागला कहीं ना फॉर मेकिंग स्टडी एग्रीगेरियन रिलेशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1949 1949 जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म जो कमिटी 1949 तार रिपोर्ट को सबमिट कला व्हाट आर द स्टेप्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एग्रीगेरियन रिफॉर्म कमिशंस तो किसी स्टेप जेपर कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स जो मध्यस्थी को दूर करवा फिक्सेशन ऑफ सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड लैंड अमंग लैंडलेस पीजेंट व्हाट इज टेनेंसी रिफॉर्म्स कौन द एग्रारियन रिफॉर्म कमिटी रिकमेंडेड अगेंस्ट एनी सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन बाय टेंट्स एंड मेंटेन दैट लीजिंग ऑफ लैंड शुड बी प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ विडोज माइनर एंड डिसेबल्ड पर्सन्स evolution of intermediary tenures in bringing tenants into
डायरेक्ट रिलेशन एनहांसेस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ टेनिस रिफॉर्म कहे टेनिस बहुत सिंपली किसी माने ब्रोड थिंग नहीं तो द एग्रीरियन रिफॉर्म कमिटी जो थिला रिकमेंड अगेंस्ट एनी सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन बुझुथे बाय टेन्स एंड मेंटेन दैट लीजिंग ऑफ लैंड शुड बी प्रोहिबिटेड एक्सपेक्ट इन द केस ऑफ विडो माइनर और डिसेबल पर्सन एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट टेनर्स जो टेनर थाए कार्य वर्ष थाए आर बिंगिंग टेंस इनटू डायरेक्ट रिलेशन एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन व्हाट इज सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग तो लैंड सेलिंग कौन द टर्म सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग रिफर्स टू लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड व्हिच नो इंडिविजुअल फार्मर और फार्म हाउस होल्ड कैन होल्ड एनी लैंड माने कौन लैंड होल्डिंग सेलिंग कौन टर्म सेलिंग जो ओनली हैंड होल्डिंग रिफर टू द लीगली स्टिपुलेट मैक्सिमम साइज बियॉन्ड व्हिच नो इंडिविजुअल फार्मर और फार्म हाउस होल्ड कैन होल्ड एनी लैंड इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विच सोशल जस्टिस व्हाट इज भूदान मूवमेंट कौन भूदान मूवमेंट वाज इनिटेड बाय विनोबा भावे तो एटा इंपोर्टेंट भूदान मूवमेंट कौन विनोबा भावे द्वारा होता इट वाज लॉन्च्ड इन 1951 1951 लॉन्च होता इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिसाइड लैंड ओनर्स एंड लेस होल्डर इन ईच कंसर्न विलेज टू renounce their land rights after which land you would be become property of village association for the egalitarian redistribution and joint cultivation. What is the green revolution? Green revolution कौन green revolution refers to a period when India agriculture was converted into an industrial system माने जो industrial agriculture थिला ता धीरे धीरे कौन convert हो जाउची industrial system रे ड्यू टू द एडप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड कहीं मॉडर्न मेथड के एडाप्ट कले एंड टेक्नोलॉजी एडाप्ट कले इट रिफर्स टू द यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स ट्रैक्टर्स इरिगेशन फैसिलिटीज पेस्टिसाइड फॉर लैंड यूज कर हाइब्रिड मंजी आम सब लगुन हाइब्रिड जिन सब क्षेत्र में ट्रैक्टर सब जो आधुनिक टेक्नोलॉजिकल सब जो इक्विपमेंट रही ओके इरिगेशन फैसिलिटीज पेस्टिसाइड्स सब आम रही आम सब पिड़िया सार खत दिखती फर्टिलाइजेसर्स ये सब यूज करा द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन आसला कहीं धीरे धीरे आमर जो कृषि थिला इंडियन एग्रीकल्चर थिला सेटा कन्वर्ट हो गला इंडस्ट्रियल सिस्टम रे तो ये यूनिट 2 रो किछि 2 मास क्वेश्चन थिला जो माने कि नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देछि आपण जॉइन होकि देखि पारबे नेक्स्ट टाइम यूनिट 3 जहा कि सोशल मूवमेंट्स को देखिया बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर गुको एथिरा हम सब सोशल मूवमेंट कि होतिला कोन ताहा देखिबा थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।